Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से पिछले 2 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड्स की गई फ्रॉम अफगानिस्तान। और दोनों डिमांड जो हैं वो लिंक करती हैं। पहले उन्होंने कहा व्हेन ही वाज ऑन अ विजिट टू यूके, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स कि वो बगराम एयर बेस जो है अफगानिस्तान से वापस ले। अमेरिकन शुड टेक कंट्रोल ऑफ द बगराम बेस अगेन आफ्टर दे विड्रॉल इन 2021। और उन्होंने कहा कि इट माइट बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ एंड वी आर निगोशिएटिंग विद द तालिबान ऑन दैट। बट उसके बाद हमने देखा कि तालिबान गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ किया और फिर कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पे अफगानिस्तान को थ्रेट किया गया इस हवाले से। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो एफर्ट्स हैं बगराम एयरबेस को वापस लेने के, इस के ऊपर हम बात करेंगे। हम बैकग्राउंड देखेंगे इस बेस का कि वाई दिस बेस, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस एयर बेस इन बगराम। फिर हम देखेंगे वाई यूएस वांट्स टू टेक इट बैक, यूएस क्यों इसे वापस लेना चाह रहा है, यूएस के इंटरेस्ट क्या हैं। और फिर हम देखेंगे तालिबान जो है उनका जो स्टांस है देयर रिफ्यूजल, उसकी क्या वजूहात हैं, वाई तालिबान आर अनविलिंग टू रिटर्न दिस बेस टू अमेरिकन, उनके क्या फैक्टर्स हैं। इन तमाम मामला के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। बट जो नेक्स्ट एपिसोड होगी नाजरीन, उसके अंदर हम मोस्ट लाइकली जिस एस्पेक्ट पे बात करेंगे दैट वुड बी कि ये जो डिबेट है बगराम एयरबेस की यूनाइटेड स्टेट्स को रिटर्न करने की, ये पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट्स क्रिएट करती है। ये जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करूं तो ये जो बगराम एयर बेस है ये अफगानिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ जस्ट इट्स काबुल, जो काबुल एयरपोर्ट है उससे हार्डली कोई ये 50 माइल्स जो है वो डिस्टेंस पे मौजूद है। देयरफॉर इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नॉर्थ में आती है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान में आती है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान में। और ये जो बेस है इसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। बट ये बेस बनी कब थी? नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बेस जो है सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1950s के अंदर हेल्प किया था अफगानिस्तान को, किंग जाहिर शाह की गवर्नमेंट को इसे बनाने में, और जो सोवियत सपोर्ट थी वो शामिल थी इसको कंस्ट्रक्ट करने में। बट हमने देखा कि 1959 में प्रॉब्ली जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट थे उनका जो विजिट हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, ही लैंडेड ऑन अफगान एयरबेस, जो बगराम एयरबेस है, और वहाँ पे उन्होंने लैंड किया था। और दैट वाज पार्ट ऑफ द एक्चुअली कोल्ड वॉर कंपटीशन बिटवीन सोवियट्स एंड अमेरिकन। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था, आप शायद जानते होंगे, सरदार मोहम्मद दाऊद, जिन्होंने अमेरिका का विजिट भी किया था उससे पहले, तो उन्होंने उसका इस्तकबाल किया था। किंग जाहिर शाह मौजूद थे वहाँ पे। तो ये एक अमेरिकन जो है वो प्रेजेंस भी वहाँ पे हमें नजर आती है लेट 50s के अंदर। फिर 1960s और 70s के अंदर हम देखते हैं कि जो अमेरिकन हैं वो अफगानिस्तान को हेल्प करते हैं इन एक्सपेंडिंग दिस बेस, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करने में मदद देते हैं। बट प्राइमरली इट इज़ यूज्ड फॉर एज एन एयरपोर्ट, बट लिमिटेड मिलिट्री यूज़ भी इसका होता है। बट हमने देखा कि 1980s में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर इन्वेट करता है तो उनका जो लॉन्च पैड है अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन का वो बगराम से शुरू होता है। तो Bagram Air Base was actually used by the Soviets in 1980s as a base from which they tried to protect Kabul, as well as launch offensive against the militants who were concentrated primarily on the east of Kabul. और ये बेस भी चूँकि नॉर्थ और ईस्ट में है, दैट्स वाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन सिर्फ इस बेस को कंट्रोल नहीं करते, इसको एक्सपेंड भी करते हैं। But the most significant part of its history is under the US in post 2001 invasion. नाज़रीन, 2001 में जब अमेरिकन अफगानिस्तान को इन्वेट करते हैं तो सबसे पहले इस बेस पे जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश मिलिट्री जो है वो कैप्चर करती है इसको, और फिर ग्रेजुअली इट इज़ यूज बाय द अमेरिकन एज वेल एज द एलाइज, जो ईसाफ फोर्सेज हैं और जो नेटो एलाइज हैं, दे यूज दिस बेस। और ग्रेजुअली इस बेस को एक्सपेंड किया जाता है, इसके अंदर पैरेलल रनवेज बनाए जाते हैं, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसके अंदर इवन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। और बिल्कुल इस बेस के बाहर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिजन है वो बनाई जाती है, जिसको यूरी बगराम प्रिजन कहते हैं, बट विच इज़ एक्चुअली नॉट बगराम, उसके साथ एडजस्टेंट है इस बेस के साथ। So एक वक्त में अमेरिकन, thousands of American soldiers were stationed over there. American intelligence network was based over there. ड्रोन के हवाले से बगराम एयर बेस is also known to be very important for the drone operations across Afghanistan and Pakistan. बट नाज़रीन, अमेरिकन अल्टीमेटली जुलाई 2021 में अपने कंप्लीट विड्रॉल से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, बगराम एयर बेस को विकेट करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग अफगानिस्तान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान मिलिट्री। और हम देखा कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो उसको लूटिंग के लिए उसके ऊपर आ जाते हैं। बट अल्टीमेटली अफगान गवर्नमेंट जो है, अफगान नेशनल आर्मी, वो कंट्रोल करती है इस बेस को। बट द तालिबान कैप्चर इट ऑन 15th of August 2021
और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान इसको कैप्चर करते हैं तो तालिबान इसके अंदर जो प्रिजन थी बग्राम एयरबेस की नोटोरियस प्रिजन जो थी उसको ओपन कर देते हैं और बहुत सारे अलकायदा दाइश टीटीपी और अफगान तालिबान के जो प्रिजनर्स थे दे गेट फ्रीड फ्रॉम इट एंड देयर नंबर इज इन थाउजेंड्स। और अमेरिकन जाते हुए ऑब्वियसली बात है बग्राम एयरबेस के अंदर जो अपने मिलिट्री कंपोनेंट्स थे उनको मोस्टली डिस्ट्रॉय करके जाते हैं। नाज़रीन अब अमेरिकन ने जब विड्रॉ कर लिया तो अब क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरेस्टेड है इन टेकिंग इट बैक। व्हाट आर द यूएस इंटरेस्ट लार्जली इन इन दिस बेस, वन बाय वन उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। Obviously, Donald Trump जो थे he was the US president who negotiated Doha deal for US complete withdrawal from Afghanistan in 2020. बट हमने देखा कि 2020 के इलेक्शन वो हारते हैं और 2021 में जब एक्चुअल विड्रॉल का टाइम आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं और बाइडन की जो विड्रॉल था दैट वाज अ मेस एट दैट टाइम। और जो डोनाल्ड ट्रंप है लेटर ऑन ही हैड एट मल्टीपल टाइम्स mentioned as early as this March 2025 के मार्च में उन्होंने कहा that had he been the US president overseeing the US withdrawal from Afghanistan तो शायद वो बगराम बेस को कभी विकेट ना करते because of its strategic importance and because of the leverage that US will get by having this base not just in Afghanistan but also regionally. So ये उनकी डिजायर थी। He has always been showing some kind of regrets that US should not have abandoned this base because it has its own strategic value. इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो उन्होंने जो अभी भी ये डिज़ायर शो की है बल्कि इनफैक्ट डिज़ायर शो नहीं की बल्कि कल जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे एक थ्रेट दिया है दैट गुड थिंग्स विल नॉट हैपन इफ तालिबान रिफ्यूज टू गिव दिस बेस बैक टू द अमेरिकन्स। तो ये जो आइडिया है ये शो करता है उनकी पर्सनल इंटरेस्ट इन द टेकिंग ऑफ द बगराम बेस बैक। बट इज इट ओनली पर्सनल थिंग? ऑब्वियसली नॉट। यूएस के कुछ और भी इंटरेस्ट है जो अगेन ट्रंप कह चुके हैं। वन सच इंटरेस्ट इज सर्विलेंस एंड पोटेंशियल काइंड ऑफ मॉनिटरिंग ओवर चाइना। नाज़रीन ट्रंप ने जैसा कहा कुछ दिन पहले कि जो ये बेस है ये बेस जो है इट इज जस्ट 500 miles away from China, from a place where China develops and makes its nuclear weapons. Forget about nuclear weapons, but obviously China is just around 500 miles away from this base because Afghanistan has a small border with China. और उससे चंद सौ किलोमीटर दूर होना is a clear indication that this base, retaking this base would give United States a leverage. It would give United States a forward base using which it can have some monitoring, some surveillance and to some extent some deterrence against China. ये ऐसे ही है नाज़रीन जैसे 1950s के अंदर United States got Badaber or Peshawar air base from Pakistan and used it for the spying purposes over the Soviet Union. But difference is that base at that time was a secret base, but this time this base is being publicly demanded by the United States. And we also know that United States and China conflict is escalating और उसके escalation में United States desperately needs the military presence on the western side of China, although it has bases on the eastern side of China, but जो western side of China है और southwestern part वहाँ पे US को ज़रूरत है and this base could be used for that. But a secondary purpose could also be to counter terrorism. हम जानते हैं कि Daesh is a major global threat. At this point of time शायद उतना visible नहीं है, but it is a future threat to the regional and the global interest of the United States. Therefore, having a base in Bagram would give United States an opportunity to keep track of the activities of Daesh and if needed to act decisively against such elements, particularly Daesh, Al-Qaeda और इस तरह के जो बाकी affiliate groups टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अमेरिका पे या अमेरिकन एलायंस पे हमला करने का प्लान बनाते हैं या बना सकते हैं। सो अमेरिकन काउंटर टेररिज्म एफर्ट में भी बूट्स ऑन ग्राउंड विल बी अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू देम। But for many scholars, there are other interests as well, including monitoring and surveillance on Iran. Iran is in the south of this base, although not too close geographically, but still this base would be an important part of the strategy of the United States to encircle Iran. हम जानते हैं कि across the Gulf they have military presence in the Gulf states, but वो influence भी कम हो रहा है और अफगानिस्तान में एक बेस का होना that would help them to have a track on Iranian Iranian जनरल और पर्टिकुलरली उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करने में हेल्प कर सकता है और फ्यूचर में अगर कोई एक्ट करना पड़े उस वाले से भी ये बेस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड बेस।
Besides that, for many scholars, this could also be used as a kind of outpost from where it can keep a check on the Russian activities in the south of Russia. Obviously, Russians primary focus is in Europe, where US is militarily present, but in the south of Russia, US presence is largely non-existent except in some parts of Central Asia. But Afghanistan के अंदर base होना, that is likely to have a significant impact on the United States effort to keep monitoring on the Russian involvement, Russian engagements, and particularly its engagement with China. उस हवाले से भी ये बगराम एयरबेस जो है that could be used for spying purposes. Obviously, this is less likely to be used in actual action against Russians, but keeping a track on the Russian involvement and engagement in Central Asia, in Afghanistan, as well as in its relationship with the Chinese. But many experts also believe, और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, that Donald Trump has an eye on the rare earth materials in Afghanistan and is wary of China gaining access to those rare earth materials. Therefore, there is a broader talks between the United States and Afghanistan. US wants two things from Afghanistan. One, the extraction of the rare earth materials, but to support that investment, they need a military presence on ground. And Afghanistan needs diplomatic recognition as well as economic kind of linkages with the United States. So therefore, जो रेयर अर्थ मटेरियल है उस तक जो एक्सेस है और जो ट्रम्प के लिए बड़ी पर्सनल चीज़ भी है और अमेरिकन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसका एक्सेस लेना, और मोर इम्पोर्टेंटली denying China access to those rare earth materials, that could also actually prompt the United States to ask for the Bagram airbase. अब अजीब दूसरी साइड पे आते हैं that why Taliban have refused. हमने देखा Taliban have categorically rejected. They said this is out of question. Why Taliban are refusing it? There are multiple explanations to that. Obviously, one of them is the Doha deal itself. Afghan Taliban has signed the Doha deal with the United States, and one of the primary conditions at that time was, so when Taliban were not in power, even then they demanded a complete US withdrawal. Now that they're in power, how could they allow the United States to have footprints, military footprints on the Afghan soil at the heart of Afghanistan, right next to Kabul? And therefore, it would be not just a denial of, that would be a kind of cancelling or reversing the Doha deal, but also posing a threat to Taliban regime in Kabul. Besides that, Taliban fear that Americans might misuse this base to spy on the Afghan Taliban, their government, their policies, and might use it to interfere in Afghanistan's internal affairs, and particularly with respect to the working of its government, जो Islamic Emirates of Afghanistan कहते हैं. Therefore, and देखा कि Americans historically have misused their presence on ground, तो इसलिए तालिबान जो है वो भी इस बात से डरते हैं. They know that once US came in, it will be difficult to force them out, and that's why they are reluctant to give this base to the Americans. Another important aspect is the potential of security challenges that Afghan Taliban might face. We know that हमने पहले बात की that Americans can use this base against Daesh, against Al Qaeda and other militant groups, and Taliban fear that hosting US bases would make Afghan Taliban complicit with US and therefore a more legitimate target by these extremist groups, and that is likely to create law and order problem, that is likely to create terrorism problem, and therefore Afghan stability, which Afghan Taliban are desperate to achieve, is likely to be affected. जो तालिबान का जो इमेज है एज अ रेजिस्टेंस फोर्स वो ख़त्म हो जाएगा और वो टारगेट बन सकते हैं बाय दीज टेररिस्ट ग्रुप्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, अनदर एस्पेक्ट इज the fear that if Afghanistan soil is used by the United States to spy on China, that is likely to affect Taliban's relationship with China. And we know that in recent years, the Taliban and China are getting more engaged diplomatically as well as economically. CPEC के extension की बात हो रही है, चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है. बट इस सिनारियो में if US militarily gets engaged in Afghanistan to contain China, this is likely to adversely affect Afghanistan's relationship with China, something that Afghan Taliban are less likely to allow. We know that Afghan Taliban have a mistrust issues with the United States, but they do not have as many mistrust issues with China as they have with the United States. So therefore, in choosing between the United States and China, their preference is likely to be China because of its geographical proximity, because of its reliability, and because of the changing regional and global dynamics. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर बेस की डिमांड है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, that seems to be very ambitious project, very ambitious design of Donald Trump, and we know that recently his more ambitious designs, including the desire to end the war in Ukraine,
have largely failed, and therefore it is less likely that US will gain access to Bagram Air Base again, and if US uses any punitive measures, that is likely to push Taliban more away from the United States. So when US was militarily present here, it could not force Taliban to change its stance on Afghanistan. Now that US is away from Afghanistan, it has limited leverage over Afghanistan. How would it convince Taliban to give this base back, considering the security dynamics and the political and economic dynamics of the region? I don't see any rationale in that. But I think Donald Trump knows it, and therefore he is taking his bets. Thank you so much, Nazin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.